Hello friends, in this video I will be talking about factors relevant to the analysis of corporate governance and stakeholder management. So there are various factors you need to know. First is company ownership and voting structure. You need to know कि क्या ownership और voting का structure है. Normally, one share equals one vote. If I am holding one share, that counts to one vote. But in dual class voting, कोई companies में dual class voting होता है, where one class has one share equal to one vote, but another class may have one share equal to multiple votes. Now there are two classes of shares. A class is normal class where one share will be equal to one vote, but another class will have one share equal to, let's say, 10 votes, or one share might be equal to just 0.10 vote. Founders and promoters usually prefer dual class voting so that they retain controlling stake by having more than 50% voting rights, even if their shareholder is less than 50%. उनका शेयर होल्डिंग जो है वो less than 50 होगा, still they will have more than 50 of voting right. How is it so? Check. Let's say there are 100 shares. 40% shares are held by promoters and 60 shares by outsiders. And I can keep dual class voting. Dual class voting meaning 40 shares will get 80 votes. 60 shares will get only 20 votes. I can do this. So dual class mein, even if the holding is less than 50%, the shareholding is less than 50%, but voting rights are more than 50%. So this is the benefit of dual class shares, and of course promoters will prefer this, meaning they have to put less money, less number of shares, but they get more number of votes. That is the reason why shares of such companies are traded at a discount. डिस्काउंट में क्यों ये शेयर ट्रेड होगा? तो रीज़न ये है कि इफ़ आई एम गेटिंग ओनली 1/3 और 1/4 वोटिंग पावर, तो डेफिनेटली आई विल बी रेडी टू पे लेसर अमाउंट फॉर दैट. लाइक इन दिस केस ये जो 60 शेयर्स वाले हैं उनको सिर्फ 20 वोट्स मिला है, मीनिंग इफ़ यू होल्ड 3 शेयर्स यू गेट ओनली 1 वोट. इफ़ you are getting only 1 vote for 3 shares you hold, definitely you will be ready to pay a lesser amount than the actual value. So discount पे usually ये trade होने वाला है. Next thing you need to analyze is the composition of a company's board. Analyst must check whether the directors are executive, non-executive या इंडिपेंडेंट. सो कॉम्पोजिशन क्या है, कितने डायरेक्टर्स है और कौन से टाइप के डायरेक्टर्स है, आर दे एग्जीक्यूटिव, नॉन एग्जीक्यूटिव और इंडिपेंडेंट. सो फॉर अ गुड बीओडी एग्जीक्यूटिव तो होगा ही, बट देयर शुड बी नॉन एग्जीक्यूटिव और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ऑल्सो, मतलब कि आउटसाइडर्स भी होने चाहिए. knowledgeable and possess relevant experience or expertise. तो एनालिस्ट शुड ऑलवेज चेक कि इनके पास एक्सपीरियंस, नॉलेज, एक्सपर्टीज वगैरह है या नहीं. अगर है तो इट इज़ अ ग्रीन सिग्नल. आर दे इन्वॉल्व्ड इन रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस? इफ दे आर इन्वॉल्व्ड देन इट इज़ अ रेड सिग्नल. आर दे टू क्लोज टू द कंपनीज मैनेजमेंट? मैनेजमेंट से अगर वो क्लोज होंगे तो शायद दे विल बी इम्पार्शियल. इफ मैनेजमेंट इज डूइंग रॉन्ग तो BOD might support them. So they should not be too close to the management. They should be independent. Third thing any analyst should actually study would be management incentives and remuneration. Management को क्या क्या incentives और क्या क्या remuneration मिल रहा है. तो analyst must be concerned if short-term performance incentive bonuses are too high that may lead to impairment of long-term performance. अंडरस्टैंड, वी कंसिडर्ड दिस एग्जाम्पल अर्लियर ऑल्सो. अगर मैनेजमेंट को आप ऐसा बोनस दे रहे हो जो शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस पे बेस्ड है, देन डेफिनेटली दे वोंट थिंक ऑफ द लॉन्गर टर्म एंड द एक्चुअल प्रॉफिटेबिलिटी विल बी इम्पेयर्ड हियर. फोर्थ पॉइंट एनी एनालिस्ट शुड चेक इज द कॉम्पोजिशन ऑफ द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी. तो कंट्रोलिंग शेयर होल्डर्स पहला पॉइंट है. यूजुअली मेजॉरिटी शेयर्स ऑफ अ कंपनी आर हेल्ड बाय इट्स रिलेटेड कंपनी to influence the policies and strategies of the company.
सी यूजुअली व्हाट हैपेंस, लाइक इन इंडिया ये रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, वो मोर देन 50% शेयर्स होल्ड करता है रिलायंस जियो इन्फोकॉम का. तो नॉर्मली व्हाट हैपेंस इज द कंट्रोलिंग शेयर होल्डर इज अ रिलेटेड कंपनी ओनली. तो चेक दैट कि कंट्रोलिंग शेयर होल्डर कौन है. देन माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स. तो कॉम्पोजिशन ऑफ शेयर होल्डर्स में एक और होगा, माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स कितने हैं और कितना परसेंटेज है, चेक दैट. एंड एक्टिविस्ट शेयर होल्डर्स, याद करो धरना, दे वांट टू बी हर्ड. So as we saw this earlier, these shareholders buy significant stake and attempt to profit by influencing the BOD and other shareholders. They will try to actually pose their decisions on the BOD. They want कि BOD हमारा सुने, हमारा policy भी implement करे, and also they will force the other shareholders to actually vote for them. So these are the three types of shareholders. So analysts should also study these types of shareholders. Next, fifth point है mismanagement of stakeholder conflicts. If you remember, in the previous LOS we had studied, I think 2-3 LOS के पहले था ये, that stakeholders में भी conflict होता है, like minority versus majority shareholder, like management versus shareholders. Then you had shareholders versus the other categories like debt holders था, फिर customers versus suppliers था, etc etc. So analysts should also be actually concerned with these conflicts and how these conflicts are being resolved. First point says analysts should be concerned if a company does not manage the risk of stakeholder conflict. अगर ये stakeholder conflict को manage नहीं कर पा रहा है तो that is a problem. A failure to manage stakeholder issues well or failure to manage other long-term risk to the company's sustainability can have disastrous consequences for shareholders and others with interest tied to the company results. Basically, if you are not managing the conflict between two groups, then it will harm each and everyone. Shareholder को तो loss होने ही वाला है, but also those people who are tied to the company, like employees है, debtors है, creditors है, etc etc. ये सबको problem हो सकता है. So if these are not being managed well, analysts should be concerned. Thank you guys for watching this video. Stay tuned to Ekeeda.